ये पढ़ ली थी स्लाइड या नहीं? नो सर, कीटोन बॉडीज से पढ़ना है। रेगुलेशन? यस सर, ये पढ़ ली थी। ओके, सो अब पैराक्सिसोम्स भी पढ़ लिए थे ना? नो सर, ये रहते हैं। ओके, so our next topic is peroxisomes. So beta oxidation also occurs in peroxisomes. Peroxisomes are basically major sites in plants. In critters, peroxisomes are primarily organelles for oxidation of very long chain and branched fatty acids, stearic acid or photanic acids. If you look in these diagrams, so you can see that all these peroxisomes are present in the plants or in animal cell micrographs. If you look in this diagram, so you have the mitochondria and you have the peroxisomes. So the beta oxidation in mitochondria, what we know is the acyl CO dehydrogenase. और असाइल CO dehydrogenase जो है उसमें हमने पढ़ा प्रीवियसली कि फर्स्ट स्टेप जो है उसमें बीटा ऑक्सीडेशन में FADH2 बनता है, फिर NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एंड अल्टीमेटली देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर हो जाता है। लेकिन क्या पैराक्सिसोम्स में ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। पैराक्सिसोम में जो है वो डिफरेंट है बीटा ऑक्सीडेशन। क्या डिफरेंस है, कितनी डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल असाइल CO ऑक्सीडेज जो है is going to have the act on the catalase, and this catalase is going to convert this peroxides into water, and so the hydrogen, for example FADH2, which is produced and during beta oxidation, is going to convert this fixing the oxygen and converting it into hydrogen peroxide, which will convert into water and oxygen. On other hand, the same NADH is basically exported for the reoxidation. Reoxidation mean के NADH जो है वो सिंथेटिक या मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएगी, ना कि एनर्जी में। ATPs में या माइटोकॉन्ड्रिया में वो एनर्जी की प्रोडक्शन में यूज हो रही है, जबकि यहाँ पे वो एनर्जी की प्रोडक्शन में नहीं बल्कि reoxidation में यूटिलाइज होगी। And then acetyl CoA is going after that. There the net production is the acetyl CoA. In citric in mitochondria, acetyl CoA is going to be converted to and is shifted or transported to the citric acid cycle, where there will be energy in the form of ATPs. But in peroxisomes, that acetyl CoA is going to be shifted or exported for the conversion into the glucose, and that we call it the gluconeogenesis. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? No, sir. Okay. So what is the catalase? What the enzyme that we were just talking here, the catalase. So catalase is basically once again heme containing enzymes. Overall reaction is hydrogen peroxide going to be converted into oxygen plus water. First step produces porphyrin cations radicals. Second step is hydrogen peroxide act as electron donor to produce H2O2 and return enzyme to resting states. So here is basically, here is the iron. This is the resting state of this enzymes, and they are going to convert hydrogen peroxide into water, and this is their active state and converting hydrogen peroxide into water. So again, the catalyze basically is fun enzyme to assist, as we called it as the Mr. Bubble enzyme, because it produces oxygen, then it's going to convert hydrogen peroxides. So that's why we called, for example, in potatoes, there is the hydrogen peroxide. You have the bubbling of this production of oxygens. So that's why there is the bubbles here. But in case if you put the HCl, so HCl will convert this, will not produce this bubble, but there is the production here, the jelly-like materials. And also in potatoes with NaOH. So if there is the sodium hydroxide and hydrogen acidic or basic reaction, so then there is no production of oxygens. But if there is the production of these, if you are using the HCl and NaOH, so it means you are changing the pH, so the reaction will not like this, and catalase will not work like this. And Staphylococcus aureus, if you do the enzyme assay, you will check that there are the bubbles here. So that's why we call it the Mr. Bubble of the enzymes. So plants do not store much fat, but seed often do, what we know. So what we know that plant seed have these triacylglycerols.
Lipases are going to convert these into fatty acids. Fatty acids will convert through beta oxidation into acetyl CoA, and acetyl CoA to oxaloacetate, and oxaloacetate to further glucose and through gluconeogenesis. And glucose can be source of either polysaccharides, amino acids, energy, nucleotides, metabolic intermediates. So these are the stages when the seed are going to be germinated. So I mean, if the seed have the triacylglycerols, so after during germination, these are those reactions which are going to be started. So the stored lipids or stored fatty acids or oils are going to be converted into fatty acids, acetyl CoA, and oxaloacetate, and glucose, and like all the metabolic intermediates and nucleotides, energy, amino acids, everything is going to be produced from that. So then we have the one other topic, what we called it the beta ketone body generations. So what we know during fasting or carbohydrate starvation, oxaloacetate in the liver is used for the gluconeogenesis. So if you have doing your fasting, so your body will convert oxaloacetate, which will be utilized for gluconeogenesis. So it's mean the major purpose of your body is to produce the glucose for your brain and other tissues, which are your sugar, blood sugar level. So that's why they will produce the glucose. And then we have after that, what we know that acetyl CoA does not enter the Krebs cycle. So during fasting, acetyl CoA will not enter into Krebs cycles because your body your body doesn't like to do work, so you want to do rest during your fasting or starvation situations. So that's why energy is not required for those purposes, but your brain need energy for thinking, for other activities, and acetyl CoA will be converted, not enter into Krebs cycle, and acetyl CoA will be converted in the mitochondria to the ketone bodies, and ketone bodies are transported in the blood to the other cells, and after that they are converted back to the acetyl CoA for metabolism in Krebs cycle to generate ATPs. If you look in this diagram, so how these ketone bodies are going to be generated from oxaloacetate are going to be generated from acetyl CoA. So as we told that acetyl CoA will not enter to the Krebs cycle during starvation or fasting. So what is going to be happen with acetyl CoA? So if you look in this diagram, so you have two acetyl CoA. So two acetyl CoA through the enzyme, what we call it the thiolase, will convert these two acetyl CoA into acetoacetyl CoA, और एक coenzyme A जो है वो रिलीज हो जाए. acetoacetyl CoA जो है इसकी फर्दर HMG-CO सिंथेज एंजाइम है जो कि HMG क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल, जो कि HMG को सिंथेसाइज करेगा. So that's why we call this enzyme HMG-CO synthase will convert this acetyl CoA into coenzyme A, and then there is a hydroxy beta methyl glutaryl coenzyme A, and hydroxy beta methyl glutaryl coenzyme A will be produced from this by using one more acetyl CoA. तो दो पहले थे तो दो कार्बन यहाँ से आ गए, दो यहाँ से आए तो 4 थे, और एक यहाँ पे इंटर हो गया तो 6. और यहाँ पे अगर आप BHMG की बात करें तो दिस इज बेसिकली हैविंग 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स. अब ये होगा कि फिर एक कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा और आपके पास बनेगा असीटोएसीटेट. असीटोएसीटेट भी कीटोन बॉडीज हैं, एसीटोन भी कीटोन बॉडीज है, और हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है वो भी कीटोन बॉडीज. तो हमारे पास ये जो है ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, दिस वन इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दिस वन इज 1 2 3 4, दिस वन इज आल्सो 4 carbon molecule. So NADH will be utilized for production of these ketone bodies. If you look in this diagram, so you have hydroxybutyrate, acetoacetate, acetyl CoA, and 2-acetyl CoA. So this is the reverse reactions. So when in case your fasting steps are your fasting time is over, or you are after starvation you get your food, so all those ketone bodies will be revert back, and they are going to be converted further again into acetoacetate. Acetoacetate will be converted into acetyl CoA,
and acetoacetyl-CoA will be converted into 2-acetyl molecules. So here are these enzymes. So for example, here is the hydroxybutyrate dehydrogenase, here is the beta ketoacyl-CoA transferase, and here is the thiolase enzymes. So they are going to convert this hydroxybutyrate into what we can say acetyl, two molecules of acetyl-CoA. If you look in this diagram, so starvation increases the synthesis of ketone bodies. You have the starvation and you are going to synthesize the ketone bodies. You are going to, during that, you are going to produce this ketone body. And these ketone bodies are mostly synthesized from fatty acids. So for example, if you look in this diagram, so you have the, here is the fatty acids. There is the normal beta oxidation, acetyl-CoA, citric acid cycle, oxaloacetate, glucose, and glucose will be exported as a fuel for brain and other tissues. And other one step is the ketone bodies formation, hepatocyte cells liver के अंदर acetoacetate या hydroxybutyrate है या acetone है, they are going to be these acetyl-CoA is going to be converted into acetoacetate, hydroxybutyrate, and acetones. And these hydroxybutyrate, acetones, and all are going to be exported as energy source for heart, skeletal muscles, kidneys, and brains. So these reactions are going to be happen during the starvation. One other condition, what we call it diabetes ketoacidosis. So primarily this is type 1 diabetes. Insulin dependent है. Low insulin होगी तो low glucose transported into the cell. Liver think it's starvation. Ketone bodies production ramp up, blood pH drops and danger zone. अब होता क्या है कि सेल जो है वो आपका ये समझता है कि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी हैपन, और उसमें सेल रिस्पांस ये कर रहा होता है कि शायद देयर इज स्टारवेशन. तो जो लोग फॉर एग्जांपल जिनको डायबिटीज कीटो एसिडोसिस होती है तो उनमें ये कंडीशंस हैं, ये अगर हम आप इस डायग्राम में देखें एसिडोसिस में. सेंट्रल कंडीशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेज है, स्लीपनेस है, कंफ्यूजन है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कॉमा. और मस्कुलर्स में सीजर, वीकनेस, इंटेस्टाइनल जो है डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रिक में जो है वो नॉसिया एंड वोमिटिंग है, हार्ट बीट जो है या अर्थीमिया और इंक्रीज हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी जो है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, कफिंग्स जो है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द एसिडोसिस. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बच्चों? नो सर. हाँ जी, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को जो है वो कंक्लूड करते हैं. और तो इस चैप्टर में जो हमने मोस्टली जो है वो फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक आपसे लिपिड्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमने पढ़ा, फिर जो है वो लिपिड्स जो है उसके डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं पाथ, किस पाथ को जो है वो फॉलो करते हैं फॉर द डाइजेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. तो उसमें हमने ये डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो इस डायग्राम में पढ़े थे. फिर हमने ये भी पढ़ा कि लिपोप्रोटीन्स जो हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं या इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. इट्स ऑल डिपेंड दैट फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड वेयर दे आर गोइंग टू बी स्टोर्ड. और फिर लिपोप्रोटीन्स के बाद जो है वो हमने ये भी पढ़ा कि जो स्टोर्ड ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स हैं, हाउ दे कैन बी यूटिलाइज्ड, और व्हेन यू नो दैट व्हेन देयर इज दिस ग्लूकागॉन सीक्रेट उस वक्त होगा जब शुगर लेवल जो है वो डाउन है, तो उसको अप करने के लिए जो है वो ग्लूकागॉन सीक्रेट होगा, और अगर शुगर लेवल अप है तो उसको डाउन रेगुलेट करने के लिए जो है वो इंसुलिन की सीक्रेशंस होंगी. फिर हमने मेटाबॉलिक फेट्स पढ़ी, ग्लिसरॉल की ऑफ कोर्स इज द बैकबोन ऑफ द फैटी लिपिड्स. और फिर हमने फैटी एसिड जो है वो हमारे पास डिफरेंट थे, फैटी एसिड की इंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा, फैटी एसिड एंट्री इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और कार्निटीन शटल प्रोटीन्स की बात की हमने. फिर जो है वो हमारे पास दो तरह के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हुई की हमने पढ़ा कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो, व्हाई वी कॉल्ड दिस बीटा ऑक्सीडेशन, बिकॉज देयर इज द addition of oxygen at the beta carbon of during this all process. और
इस प्रोसेस में हमने डिफरेंट साइकिल फेजेस में पढ़ा कि हाउ देयर इज द नेट एनर्जी डिफरेंस जो है वो मौजूद है बीटा ऑक्सीडेशन में, और बीटा ऑक्सीडेशन का बाकी ग्लाइकोलाइसिस और अदर जो मालिक्यूल्स हैं उनसे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसमें डिफरेंस क्यों है। फिर हमने सैचुरेटेड के बाद अनसैचुरेटेड पढ़े, मोनो अनसैचुरेटेड की बात की, पॉली अनसैचुरेटेड की बात की, और फिर हमने ऑड नंबर की भी बात की, और ऑड नंबर के बाद फिर हमने उसकी रेगुलेशन, और आज का जो हमारा टॉपिक था वो पेरोक्सोसोम्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। सर ये स्ट्रक्चर्स जैसे कौन कौन से करने हैं? क्या मतलब कौन सा स्ट्रक्चर? ये कीटोन बॉडीज का आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। ये जो आज हमने पढ़ा है ना, ये कीटोन कीटोन बॉडीज जो है, ये वाला जो पाथवे है कि एसीटो एसिटाइल कोए से कैसे एसीटो एसिटाइल कोए बनता है, और कैसे HMgCO बनता है, और उससे एसीटो एसीटेट और हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन्स क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। पूरी स्लाइड में बस यही वाले ना? पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले जो हमने पढ़े हैं उसमें आपको पता होना चाहिए बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुई। फॉर एग्जाम्पल इन स्ट्रक्चर में ज्यादा बात उनके स्ट्रक्चर की नहीं की गई बल्कि स्टेप्स की बात की गई। ओलियट की अगर बात की गई है तो इट्स मेंशन दैट इट्स 18 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और ओलियट के 18 कार्बन मॉलिक्यूल में कितने स्टेप्स जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन के होंगे? 3 फर्स्ट फेज में हुए हैं और 5 लास्ट फेज में हुए हैं। 5 और 3 8, तो 8 फेजेस में 9 तकरीबन जो है वो एसिटाइल कोए बनते हैं। तो बाकी ये स्टेप्स के इंटरमीडिएट में जो साइकिल्स हैं वो है कि अगर आपसे ये प्रूव करना पड़े, कि आपसे ये पूछा जाए कि व्हाई वी कॉल दिस एज बीटा ऑक्सीडेशन, तो देन यू हैव टू एटलीस्ट मेंशन दी स्टेप। अगर रेस्ट ऑफ द चेन आप मेंशन नहीं भी करते तो आप ये बता सकें कि बीटा कार्बन जो है उसके ऊपर कैसे जो है फर्स्ट स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन होती है, फिर हाइड्रेशन होती है, और फिर डिहाइड्रोजनेशन के बाद किस तरह इस बीटा ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो बीटा कार्बन के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन मालिक्यूल आके बाइंड कर जाता है। यही स्ट्रक्चर है इसमें, कि ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है इस चैप्टर में।